Hello students, so I am here with the solution of exercise 5b. Starting from question number 1, state the modern periodic law. Everybody knows modern periodic law, physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number. Okay, so modern periodic law, actually it is given on page number 82 inside this pink box, modern periodic law. The next part B, how many periods and groups are there in modern periodic table? You know, there are 7 periods and 18 groups. There are 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. Then question number 2. What is the main characteristic of the last element in the periods of periodic table? What is the general name of such elements? Actually, they are asking in every period, what is the special characteristic present in the last element? So, you know, the last element of every period is noble gas. So, start the answer. Every last element of a period has the valence shell complete. Every last element of a period has the valence shell complete, and they are generally known as noble gases. They are generally known as noble gases. Question number 3. What is meant in periodic table by a group? So just write down, a group represent vertical columns. And what is meant by a period? A period represent horizontal rows. A group is representing a group represented by vertical column, and a period is represented by horizontal rows. Then question number 4. From the standpoint of atomic structure, what determines which element will be the first and which the last in a period of the periodic table? If you see the atomic structure, actually the question they are asking, according to the atomic structure, how can we determine that which element should be the first and should be the last in a period? So डायरेक्टली फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. समझ में आया ना? अगर आप किसी भी पीरियड में चलते हैं, यू नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे गेट सक्सेसिवली इंक्रीजिंग बाय 1. सो इफ एनी एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इट शुड बी द फर्स्ट, एंड द एटम हैज़ 8 electron in the valence shell, should be the last. So write down the answer. The valence electrons can determine which element is first and which will be the last in a periodic table. The valence electrons determine which element will be the first and which is the last in a period. Full stop. Element having one valence electron will be the first element, and the element having 8 valence electrons will be the last element in a period of the periodic table. Then question number 5a. What are the following groups known as? Group 1 known as alkali metals. Group 17 they are known as halogens. Group 18 they are known as noble gases. Then question part B, name 2 elements of each group. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप 2 alkali metals, 2 halogens और 2 noble gases लिखेंगे. Then question number 6, what is the number of elements in first period? You know first period is the shortest period. It has only two elements. First period 2 elements only and known as shortest period. Then B, third period of the modern periodic table. So आप लिखेंगे third period is the short period having 8 elements in the modern periodic table. Third period is the short period having 8 elements in the modern periodic table. Then question number 7. How does the number of valence electrons and valency vary from moving left to right? Left to right का मतलब they are asking the trend in a period. तो सबसे पहले हमको valence electron का trend बताना है, फिर valency का trend बताना है. तो हम heading डालेंगे question number 7 और उसकी सब heading number 1 valence electrons. उसके नीचे लिखेंगे valence electron successively increases by 1. Valence electron successively increases by 1 on moving from left to right in a period. और second लिखेंगे valency. Second is about valency. So you will write valency first increases up to 4 and then decreases to 0
on moving from left to right in a period. Actually they are asking this trend for second period and third period. तो हमें अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं बेटा, because you know the same trend will be followed in every period, whether it is second, third, fourth, fifth and all. So we can write the combined answer. ठीक है, तो आप एक ये भी आप आंसर में ऐड कर सकते हो. जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, इन बोथ द पीरियड, क्योंकि सेकेंड और थर्ड के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं इन बोथ द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली इंक्रीजेज बाय 1 एंड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 and then decreases to 0. Okay, now coming to question number 8, how do atomic structures, electronic arrangement change in a period with increase in atomic numbers moving from left to right? If they are asking about configuration or atomic structure, we have to explain with number of shells and with the number of valence electrons. Okay, so on moving across the period, number of shells remains same, but number of valence electrons successively increases by 1. Okay, so and on moving across the period, number of shell remains same, but number of valence electrons successively increases by 1. Then coming to question number 9. This question refers to elements of the periodic table with atomic numbers 3 to 18. 3 से लेके 18 तक के एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन द टेबल बिलो. सम एलिमेंट्स आर शोन बाय लेटर इवन दो द लेटर्स आर नॉट द यूजुअल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. सच क्वेश्चंस generally come in your board exam for 9th as well as for 10th class. Many times I told students, whatever they have shown the element with the symbols or their or any English alphabet, the answer must be given with the same alphabet. अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 में ए लिखा है तो आपको इसकी जगह लिथियम लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा. योर आंसर मस्ट बी ए. अगर आपको किसी में ए बताना है, एटॉमिक नंबर 3 वाला एलिमेंट बताना है, तो आप उसका आंसर ए लिखेंगे. डोंट राइट द एक्चुअल सिंबल ऑफ द एलिमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज अ नोबल गैस? अब आपको पता है नोबल गैस जो होते हैं दे आर द लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स. सो जिसका एटॉमिक नंबर 10 और 18 होगा वही तो नोबल गैसेस होंगी. तो आंसर मस्ट बी एच एंड पी. प्लीज डोंट गिव नियॉन एंड आर्गन. आंसर मस्ट बी एच एंड पी. ओके, अ हेलोजन, हेलोजन इससे जस्ट पहले वाला सेकेंड लास्ट ग्रुप होता है. सो द आंसर विल बी जी एंड ओ. एटॉमिक नंबर 9 और 17 हेलोजन्स होते हैं ना, बट डोंट राइट फ्लोरीन एंड क्लोरीन. द आंसर मस्ट बी जी एंड ओ. देन एन एल्कली मेटल. एल्कली मेटल, अब चूंकि दो दो दिया है तो मैंने दो दो बता दिए हैं, आप एक चाहो तो एक भी लिख सकते हो. एल्कली मेटल यू नो द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सो द आंसर विल बी ए एंड आई. एंड देन एन एलिमेंट विद वैलेंसी 4, वैलेंसी 4 वाले होंगे द एलिमेंट्स ऑफ दिस वन ग्रुप 14, तो आंसर विल बी डी एंड एल. Okay, so here I have finished. The remaining part we will discuss in the next video.